Today, I'm going to discuss a very important group discussion topic which usually comes in most of the SSB's lecturate and which is asked during interviews. So friends, आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं एक बहुत मेजर और एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम. We are going to discuss a major and a big problem, one of the biggest problem, which is not a problem of one country. It's a widespread problem. But if we talk about underdeveloped and developing country, so this problem is mostly found in this country, and I am talking about the mother of all problems. Yes my friends, I am talking about corruption. Problem of corruption. So friends, आज हम ग्रुप डिस्कशन सेशन में डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ करप्शन. जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि दिस टॉपिक इज मोस्टली कमिंग इन द जीडीज, बी इट एनडीए एसएसबी और सीडीएस एसएसबी और एयरफोर्स एक्सवाईजीडी और लेक्चरेट. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम ऑफ करप्शन. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि इस प्रॉब्लम में हम क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे. और मैंने जैसे आपको बताया कि प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हुए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें माइंड में रखने होते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट होगा व्हाट इज द प्रॉब्लम, मीन्स व्हाट इज करप्शन. सेकंड होगा सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ करप्शन. थर्ड हम डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज द लेवल एंड द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ करप्शन इन आवर कंट्री इंडिया. और फोर्थ हम डिस्क्राइब करेंगे व्हाट आर द अफेक्ट्स ऑफ करप्शन. फिफ्थ हम डिस्क्राइब करेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ करप्शन. एंड लास्ट विल डिस्क्राइब व्हाट आर द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. तो चलिए चलते हैं. हम फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज करप्शन. सो फ्रेंड्स, जीडी में ग्रुप डिसीजन में जब भी आपके पास टॉपिक आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आपको अपने वर्ड्स में उस प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करना है. जैसे आई डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन. करप्शन मीन्स वे ऑफ डूइंग एनी वर्क इलीगली और अगेंस्ट द लॉज. कोई भी काम जब हम इलीगली करते हैं या अगेंस्ट द लॉज करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ करप्शन. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डूइंग एनी वर्क dishonestly or misusing public fund for our own self interest, or by giving bribe or by giving unfavor to any officer for doing work illegally. तो जब भी हम कोई काम खुद ऑनेस्ट डिसऑनेस्टली करते हैं, या हम किसी को ब्राइब देते हैं, या हम उसको अनड्यू एडवांटेज देते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के से हटके इलीगली काम करे, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ करप्शन. तो चलते हैं, ये थी डेफिनेशन. नाउ आई विल टेल यू व्हाट आर द सिंबॉलिक मीनिंग्स ऑफ करप्शन. सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? तो करप्शन मीन्स अ सोशल डिजीज which spreads from one person to another person. Whenever people find some people corrupt, and when they see that they are getting advantage, so they also become corrupt. So it's a social disease. Second, corruption is a termite. Corruption एक दीमक है which is eating the growth of our country. Third symbolic meaning is that corruption is like a waterfall which flows from top to bottom. करप्शन एक ऐसी चीज है जो हमेशा टॉप ऑफिशियल से नीचे वाले बंदों पे पहुंचता है. एंड फोर्थ इज करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स. इट इज अ सिंगल प्रॉब्लम विच गिव्स राइज टू मेनी अदर प्रॉब्लम्स इन एनी कंट्री. तो ये मैंने बताया डेफिनेशन, सिंबॉलिक मीनिंग. अब हम वी विल डिस्क्राइब व्हाट इज द लेवल ऑफ करप्शन इन आवर कंट्री. सो एज पर द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट of UNO, India ranks 79 place in transparency. पारदर्शिता की अगर हम रिपोर्ट देखें तो उसमें इंडिया का रैंक 79 है आउट ऑफ 176 कंट्रीज. इट मींस यहाँ पर फेयरनेस, काम में फेयरनेस, ऑनेस्टी की जब बात की जाए तो हमारा रैंक है 79. एंड द कंट्रीज विच आर ट्रांसपेरेंट, विच आर ऑनेस्ट, दे आर डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे and New Zealand and Australia. They are the top 5 honest countries. और इंडिया का रैंक है 79. तो you can measure that these countries are highly developed, and India, why is India still developing country? Because the transparency, the honesty in our country is very low, and that's why India rank is just 79. And if I talk about the level of corruption in different departments in our country, so the corruption is found in each and every department in our country, be it education department,
health department, your public administrative services department, your defense department. Even in defense we see corruption cases. So now corruption has reached to each and every department of a country. And if we say that which are the most corrupt departments in our country, so sorry to say, but education, health, and public administration are the most corrupt departments of our country, and which are responsible for the development of the country. That's why a country is still a developing country, क्योंकि जिन department, the department which are responsible for the development of country, they are corrupt. According to a recent report, it is found that in schools, colleges of UP, Bihar, and some other states, 25% teachers are found absent from their duties. So negligence of duty, avoiding your duty, is also part of corruption. And in most of the hospitals, 15% doctors are found unavailable, means they are running their private clinics. So that shows the level of corruption. And if we talk about the education department of a country, so it is seen that uh, during exams, teachers are helping students to get good marks, and we see that students are scoring high numbers, like 80%, 85%, 90%. But when they appear in competitive exams, so they are not able to compete with other state students. So it shows the education that they are taking, that is not a quality education. So it shows the level of corruption in our country. और लोग कहते हैं, people say that our police is corrupt, our IAS officers are corrupt. So what is the reason? जब उनकी क्वालिटी एजुकेशन मिलती नहीं है, जब बचपन से ही वो चीटिंग करके पास होंगे, when they pass the exams through illegal ways, through unfair ways, so how will they become a good officer? Means when they do a job, when they get a job, so they know only one thing, like use dishonest ways, use illegal ways, and pass the exam. So this thing goes with them throughout their life, and they are never able to become an honest officers. So now let us discuss. अब हम डिस्कस करेंगे what are the effects of corruption. Corruption के क्या effects होते हैं? So there are many adverse effects of corruption. First, corruption always hampers the development work of any country. किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है करप्शन की वजह से, क्योंकि जो गवर्नमेंट पैसा देती है गरीबों के विकास के लिए या किसी एरिया के डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा जो बीच के अधिकारी होते हैं, ऑफिशियल bureaucracy होती है, they eat up that money or they misuse that fund. So the fund which should be allotted in the development, that goes in the hand of, that is taken by the corrupt officials, and they don't use it properly. That's why we see broken roads, we see most of the roads full of potholes, गड्ढे हम देखते हैं रोडों में. We see the bad condition of hospitals, we see the bad condition of our education institutions in our country, schools, colleges, because the money that comes from central government, that is not utilized properly, or that is used that is misused by the public administrative officers, by the politicians. And that's why our country does not get good quality education, good quality hospitals. सेकंड जो इफेक्ट होता है करप्शन का, वो होता है वीक इकोनॉमी. यस माय फ्रेंड्स, वीक इकोनॉमी, जीडीपी गिरती है हमारी कंट्री की. और जब भी करप्शन होता है तो हमारी कंट्री जो इकोनॉमी होती है वो गिरती है. दैट्स व्हाई आवर कंट्री इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री. लोगों का इनकम लेवल उठता नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं उठती है, क्योंकि जो पैसा लोगों तक पहुंचना होता है, that is eaten up by the politician, that is eaten up by the bureaucrats, that is eaten up by the dishonest officers, and that always brings our economy down, our GDP down. So the second adverse effect of corruption is low GDP, low economy of the country. Third, weak law and order and more crime. The more the country is corrupt, the more crime there is. जिस कंट्री में जितना ज़्यादा करप्शन होगा वहाँ उतना ही ज़्यादा क्राइम रेट होता है, बिकॉज वहाँ की पुलिस, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव, वहाँ की जुडिशरी करप्ट होती है. तो पीपल डोंट गेट जस्टिस, लोगों को जस्टिस नहीं मिलता है. एंड दैट्स वाई देन दे टेक लॉ इन देयर हैंड, वो अपने हाथ में लॉ लेते हैं, एंड दे स्टार्ट डूइंग क्राइम, बिकॉज दे डोंट हैव फियर ऑफ पुलिस, दे डोंट हैव फियर ऑफ लॉ, because they know that
they will not get justice from these policemen or from this judiciary, because they know that the judiciary is corrupt. So they start using law and order in their hand. That's why we see the crime rate is so high in some states like UP, Bihar, Haryana, Rajasthan, because there we see the police is highly corrupt. When the police is corrupt, so automatically people have no faith in police, in law and order, and then they take up the laws, and they start committing crime, and they start taking laws in their hand. So it makes the law and order very weak. And करप्शन की वजह से बहुत सी योजनाएं जो अगर पैसा सही तरह से यूज किया जाता, जिससे डेवलपमेंट होता, रोजगार खुलता, वो भी नहीं हो पाता. एंड दैट्स वाई करप्शन इंक्रीजेस पोवर्टी ऑफ द कंट्री, corruption increases unemployment of the country. And when the foreign investors, FDI means बाहर के लोग जो हमारे देश में पैसा लगाते हैं, when they see the system is very corrupt, so they are also not interested to invest money in a country. So it also decreases the FDI in a country. The countries which are fair in business, the countries where people are honest, their other country people also wants to invest money. So this is one more bad effect of corruption, that it decreases the FDI. So हमने discuss किए, there are some effects, adverse effects of corruption. Now we will discuss causes of corruption. Yes, my friends. So what are the possible causes of corruption? The first is lack of political willpower. Yes, my friends. जो गवर्नमेंट होती है किसी भी देश की, अगर उसकी विल पावर स्ट्रांग ना हो, अगर वो नहीं चाहती है कि करप्शन हटे, अगर वो नहीं चाहती है कि करप्शन जाए, और अगर ऑनेस्ट पॉलिटिशियन नहीं आते हमारे यहाँ, तो ऑटोमेटिकली करप्शन बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम. एंड दैट्स व्हाई वी सी that in some governments, when the prime minister is very strict, so he brings anti-corruption laws. Like in the case of Prime Minister Modi, he made laws so strict like GST, like जिससे कि लोग टैक्स इवेड ना कर पाए, ओके, टैक्स की चोरी ना हो, करप्शन ना हो. ही imposed demonetization in a country, नोटबंदी, okay. He imposed many digitization in a country, like digital पेमेंट हो, जिससे कि साफ साफ पता चले कि कौन किसको पैसा दे रहा है. एंड देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ ब्राइबिंग, एंड देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ ईटिंग अप द मनी. और अगर डिजिटाइजेशन होगा तो लोगों तक पैसा जाएगा, उनके अकाउंट तक जाएगा. एंड दिस वी सॉ ऑल दिस इन एनडीए गवर्नमेंट और इन मोदी गवर्नमेंट. सो मोदी गवर्नमेंट का मैं यहाँ पर कोई बड़ा तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो विल पावर दिखती है, इसकी वजह से बहुत सी चीजें ऐसी हो रही है, लोग अब करप्ट नहीं हो रहे, क्योंकि इन्होंने बायोमेट्रिक मशीन्स लगवाई, ओके. इन्होंने बोला कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में और स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में बायोमेट्रिक मशीन लगेगी, तो ऑटोमेटिकली दिस इज द विल पावर ऑफ government. So if the government's willpower is low, so there will be more corruption in the country. Second reason है corruption का, greedy people. Yes, my friends, greedy people. If our country, if any country is full of greedy people, so that country cannot become an honest country. तो लोग लालची जिस देश में होते हैं वहाँ करप्शन ज़्यादा होता है. Third, like I should say that weak law and order. So whenever there's a weak law and order, so people start using illegal ways. They see that that the law and police is not taking actions, and the judiciary is very slow. So there people start using illegal ways. They start becoming dishonest. So lack of fear of judiciary, lack of fear of police among the people also increases corruption. That's why we see कि जो इंडियन हमारे देश में करप्ट होता है, डिसऑनेस्ट वेज यूज करता है, द सेम इंडियन इफ ही गोज टू सम स्ट्रिक्ट कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया और गोज टू दुबई, so here there he becomes honest. So it is all because of the lack of fear of law and order and judiciary among the people of country. So these are some of the possible reasons behind corruption. Now let's talk about the solution point. Solution point की बात करते हैं. So if we talk about the solution of corruption problem, so the first is more and more transparency in government and all departmental works by introducing digitization.
ओके, तो जितना हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, जितना हम डिजिटल होंगे, उतना ही करप्शन कम होगा, क्योंकि चांसेस ऑफ करप्शन कम हो जाएंगे। इफ वी मेक ऑल द पेमेंट्स इफ वी मेक ऑल द पेमेंट्स कंपल्सरी बाय डिजिटल पेमेंट, लाइक आपने देखा होगा पहले जब गैस बुकिंग होती थी तो उसमें ब्लैक मार्केटिंग होती थी। जब आपने देखा होगा पहले फॉर्म फिल भी किया जाता है, छोटे छोटे फॉर्म्स भी फिल किए जाते थे, तो उसमें ब्लैक में फॉर्म ऑनलाइन पेमेंट, सो देर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ करप्शन। पहले जो लोग अपनी पेंशन लेने जाते थे तो उनसे पैसा डिमांड किया जाता था, नाउ द पेंशन कम्स इन द अकाउंट डायरेक्टली थ्रू डिजिटल पेमेंट। सो जितना हम डिजिटल होंगे, जितना हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, द चांसेस ऑफ करप्शन विल बी लेस। एंड सेकंड है strong willpower of the government. We should elect honest people. We should elect educated people, and we should not elect uneducated people, illiterate people. So अगर हम एजुकेटेड लोगों को चुनाव जिताएंगे या चुनाव के लिए खड़ा करेंगे, ऑनेस्ट लोगों को मौका देंगे, तो ऑटोमेटिकली द करप्शन विल बी लेस इन आवर कंट्री। एंड थर्ड solution to this problem, that creating awareness among the people for nationalism, okay, and for that the people should be made aware that this is their country, okay, and leaders should set examples. We should elect honest leaders, and the law and order situation should be strict. There should be some strict laws, anti-corruption laws like RTI, okay, Lokpal bill, and other should be introduced in the parliament, so that the corruption, the ground, the chances for corruption should go down. So friends, ये थे कुछ solution for this problem. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. You have understood that how to speak during a GD. So इन points को आप group discussion में use कीजिए, and I am giving you 100% surety that if you watch this video completely, so you will be able to crack GD very easily. और आप किस टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, तो आई विल come out my opinion on the topic, and subscribe the channel and share the video. I hope you must have understood this topic, problem of corruption. तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रॉब्लम या अगले जीडी टॉपिक के साथ. तब तक ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम.